As we all know that today we are gathered here to celebrate the 11th investiture ceremony of Starix International School. First of all, our recorders of knowledge by lighting the lamp. VTV channel and president of Young India organization. Second, Colonel Yadav, who is a dynamic personality and a professionalist. He is very loving, caring. She is a lady with great vision. As far as I have known her, she is a dynamic personality, a good guide. New heights day to day. We also welcome our coordinator, Thakur N.P. Singh. Right by everyone. It's about doing what's right. As we all know that education is the process that leads to the overall development of the great science, followed by Umang Yadav of American science. Now the history of Atlas. The symbol of Atlas is our color yellow and its motto. Next is Poseidon Arm. The captain Priyanka Goyal, 12 science, followed by Mohit grade 11 science. A brief history of Poseidon. Symbol is dolphin, color red, and motto peace empowers. Poseidon is best known as the god of the Archer senior 12 sciences captain, and Nisha Pandal 11 science is vice captain. Brief history of Venus. The symbol is called color green, and the motto knowledge transcends. The sport captain and vice captain.
ready to shoulder the responsibilities levied on him. I invite Meenakshi ma'am that I shall discharge my duties and carry out all my responsibilities without fear or favor to the best of my abilities by my thoughts, words, deeds, and I shall add to the glory of the school and prove myself worthy of the trust responded in me with humanity, dignity, and trust. Jai Hind! To begin with, first of all in the sequence are the discipline captains. There are 2 discipline captains and 2 vice discipline captains. The discipline captains, first Shubham Royla, second Deepanshu Sharma, both from grade 12 science. Shubham Royla intends to be a cardiologist. Deepanshu Sharma wish to go in Air Force. As they take the responsibilities of the school, we wish that these students may a dermatologist and Tamanna Sharma 11 Science who wish to be a dietitian. I wish that these children may surely achieve their goals in life. Is a must to achieve a goal in life. Next in the series are the sports captains. Rahul Balwan, grade 12 science. This young boy wished to be an Air Force officer. The vice sports captain Dinesh Kumar, grade 12 science, wishes to be an IPS officer. A great vision, great dreams. Hard work is required. The responsibilities in the school shows that they can be doctor, whereas the vice academic captain, Ms. Annu Yadav, 11 science, why the children hesitate to clap, I don't know. Why don't you cheer up and just give a big round of applause? Yes, that's better. Ekta Yadav aims to be a cardiologist.
May God grant her success in life. The next Vice Cultural Captain, Ms. Yashamati Sharma from 11th Commerce and Aman Kina from 11th Commerce. Both these students dream to become chartered accountants. Hard work, patience, and perseverance will help you to achieve your goal. It's our prayer to God from 11th Science. Bhageshwari aspires to go in Indian Air Force. All the best, Bhageshwari. And we expect that you may bear the responsibilities well in the school first. Second, Vice Event Captain Sweta Minhas, who wish to go in an Indian Army. Vaishali girl, 11th Science. Nikhil aspires to go in Indian Navy and Vaishali to be an IAS officer. Mr. Umang Yadav, 11th Science. Reena wishes to be a neurologist, whereas Umang wishes to become an investigating officer. The third house is Poseidon House. The captain of Poseidon House is Priyanka Goyal, grade 12. You are expected to maintain better discipline, mainly in the place where you are sitting now. Please maintain the dignity of the occasion. Mohit Anjana, the Vice Captain of Poseidon House. Yes, students, your energy level has gone to the least. Clap. Yes, is Arthur Singh from grade 12 Science and Vice House Captain Nisha Panwar from 11th Science. Arthur wishes to be a cardiologist and who aspires to go in administrative services. Again, I have to remind you all. Only 2-3 students I can hear clapping. Third. And the school head girl. We have Miss Tanya from 12th grade as the school head girl, who is quiet, calm, but confident lady, and the school head boy, a dynamic personality, confident, determined, a good sports person. Yes, Yuvraj Yadav.
Tanu. She is a smart, quiet, but it is leading everybody to win. Good morning, respected Director Sir, Principal Ma'am, teachers, and my dear fellows. Today, I stand here humbled by the task before me and grateful for the trust you have bestowed upon me. I thank the Principal Ma'am for giving me this opportunity to prove myself worth of the honors given to me. At this moment, I take the pledge of dedication to the service of the school, which is our alma mater. To keep the prestige high of our school, we have to labor and to work hard to give reality to our dreams. For this, discipline is the first and foremost step to be taken. We have to build this abode by putting up faith and confidence to make it one of the best jewels. I believe our school is like a tree. We are all different parts of this tree. For example, the teachers are like the roots, which supplement us with knowledge and help us to grow. Head girl is like the manure, which the gardener spreads to enrich the ground. Just that little added extra can make a big difference. I do take the pledge to put all my best of efforts to maintain the glory of our institution. I'll fulfill this responsibility by contributing to the promotion of the school and bright future of the students. The school has provided not only the education and identity, but also made me the person of substance. True leadership is a quality many aspire to and few truly obtain. Because in order to become a leader, you must first learn to follow. In the end, I would like to conclude by a quote. Individually we are good, but together we are magnificent. In brief, I want to tell about this young boy. He has been a contingent commander of the horse-mounted contingent of NCC in Republic Day Parade. He has been the best junior. Encourage and empower others to do. Respected Colonel Sir, Principal Ma'am, teachers, guests, and my dear friends. I, Yuvraj Yadav, stand here on this platform as the head boy of Starix International School. It is a moment of honor and proud privilege for me for being chosen for this post. My role will be immensely important not only for school but also for the students. I have watched these roles being played and often dreamt I would one day become involved in one of them. Today my dream has come true. With the support and confidence of my respected teachers, I swear before Almighty and promise to one and all present here that I will proudly represent the school in everything I do. Wearing the logo on my shirt every day gives me a sense of determination with honesty, dedication, and truthfulness. Further, as the head boy, I'll ensure that the school continues to build a profile as a unique school. I would try my level best to meet all the challenges put before me and would approach it with enthusiasm, an open mind, and everyone's interests. My role would not just be to wear a badge or a title, but I would always try to be the role model to the younger students and my peers. I would also strive for their interest, keeping in mind the prestige and image of the school. I'll always be passionately putting my efforts in the right direction to make Starix the better place in terms of studies, sports, co-curricular activities, and discipline. You all should understand that our school motto is "Now is forever." It means that you at Starix are gifted and presented with a bouquet full of opportunities, and it's high time for us to avail all of them to become responsible citizens of India. If we sow now, we can get good yield of crop forever. But don't think that's all about result. Whether in exams or in the sports field, I have found that it's the journey that counts, not the destination. I request each one of you to remember a quote of Abraham Lincoln. Most anyone can stand adversity, but to test a man's character, give him power. I showed you I would lead with optimism, enthusiasm, positivity, guard against pessimism, and weed out negativity. For a leader, these qualities are of utmost importance and that one valued the most. All good leaders possess them,
I am confident and I often set my mind on a goal and commit myself to achieve it. As Gandhiji said, I suppose leadership at one time meant muscles, but today it meant getting along with other people. In the end, I would request all the students to take a pledge with me to see the flag of Starix soaring high in the skies with following colors. Get ready for the pledge. Take pledge person. Get ready for pledge. We the students of Starix International School take a pledge and shall always strive and proactive. We will show respect and seek first to understand them, to react. We will be good role models. We will have integrity and synergize the trust, confidence of teachers in us and contribute to safe and joyful learning environment at Starix International School. Jai Hind! Thank you, Yuvraj, for a wonderful speech. Now, I request our chief guest, Mr. Ajit Veer sir. शुभकामनाएं देता हूं। जो आपको पद सौंपा गया है, मेरे हिसाब से आप लोग सभी उस पद की गरिमा को निभाते हुए स्कूल का नाम रोशन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पद मिलना बड़ा आसान है, परंतु पद का संपूर्ण रूप से तहे दिल से निर्वहन करना बड़ा ही कठिन कार्य है। इसमें आप लोगों का सभी का सहयोग, सभी विद्यार्थियों का सहयोग अगर जिन टीम के साथ रहा तो ये विद्यार्थी जरूर हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। इस स्कूल में आकर मैं पहले भी एक दो कार्यक्रमों में आपके बीच में आया हूँ और आज भी मुझे कर्नल साहब की वजह से आने का मौका मिला, तो तहे दिल से मैं कर्नल साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बचपन मेरा दोबारा से याद दिलाने में एक प्रयास किया है। क्योंकि बच्चों, इस तरह का डिसिप्लिन हमारे टाइम में तो नहीं था, परंतु जब से कर्नल साहब यहाँ पर आए, मेरे ख्याल से पूरा आर्मी का सा माहौल मुझे यहाँ पे स्कूल के अंदर नज़र आ रहा है। मैं भी आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा साहब और ताऊ जी फ्रीडम फाइटर थे और मेरे पिताजी नायक सूबेदार रहे हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं देश की सेवा में लगा हुआ हूँ। सिपाही नहीं तो कहीं ना कहीं कलम का सिपाही बनकर आप लोगों के बीच में हूँ। न्यूज़पेपर है, टीवी चैनल है, तो मेरा एक कहीं मैंने सुना था कि देश की सेवा करनी है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम सरहद पर जाएं। देश की सेवा अगर जब हमें करनी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सरहद पर जाएं, कलम के सिपाही बनकर भी इस देश की सेवा की जा सकती है। जय हिंद, जय भारत। Respected chief guest, principal, all the teachers, parents, whosoever is here, and my dear students. Today it reminds me of my days which I spent in the school and the college. My compliments to all of you that you have put up such a good show in a short time in spite of having the constraints of the weather. It is very important for all of you, those who have been appointed today, you can call as a council of the students or whatever you say. Those who are wearing the badges and the sash and holding the flags, you have a very important role because you have been selected, the specialists of that field. Guide your juniors, take them along, teach them, motivate them. They should also be standing where you are today. I must tell you, your duties as the younger generation of the nation doesn't stop here in the school. Once you leave the school, you board the bus, you get down, you go to your home,
your town, city or the village, you have a vast responsibility. If you can convey what you are being taught, what has been spoken by the head girl, by the head boy, try and implement it out of the school also. You will see that people will start calling you in your locality that he is one of the best boy or the girl and which school he studies. Be sincere, as the head girl brought out, be disciplined. Without discipline, you can achieve nothing. One has to be disciplined. I am sure all of you are aware that lots of soldiers, they die while facing the militants or fighting a battle. Why do they die? Because they are disciplined. They have been told to do something and they do it. In which there can be a death also and there can be a win also. So please be disciplined, be sincere. You must have integrity. Be respectful to your teachers. You must know that your teachers who are here, they are here as teachers because they have got some special qualities. Because they can teach. The parents of yours have shown a great confidence in the school. They do everything for you. They earn, they work, they contribute day and night. If my son or my daughter should become something tomorrow. Kind of confidence your parents have in you. If you are disciplined, sincere, you have integrity. If you study, try to behave, become a good citizen, I am sure your parents will get the reward which no one can give them. Taking care of the juniors is very important. I must tell you, being an army man, what we have learned during our training, the 90% has been taught to us by our seniors, senior cadets, not the instructors. So the seniors who are in the 12th, 11th, 10th, likewise, you must help your juniors, make a good team. It should never happen that you bully your juniors, no. Promote them, help them in studies, help them in sports. You must know that all of you, the younger generation, you are a proud of the nation. You are the proud of the state. You are the proud of your parents. Please remember, who are giving you a state that you become a good, a successful citizen of the nation. At the end, my compliments to the principal, to all the teachers, and especially to those who have been involved in organizing this practice and put up a good show. My compliments to the drill instructor sahab, the PTI sahab, and all those, the admin staff who have been helping to put up a good show. I am sure in the days to come, whenever you have such events, you will be contributing like this, all of you, and day by day improve and make it better. Thank you. Honorable Chief Guest, respected Colonel R.S. Yadav, parents, teachers, and my dear students. On the occasion of investiture ceremony, I am here to give you another speech, but please remember, each one of us want you what we say in our speech. The ceremony is marked as inaugural for duties. Investiture ceremony is an occasion of installing students with responsibilities along with the title. For any school and its students, it is a day of great significance due to its literal meaning, installation of duties. The word investiture means installation of duties. My dear students, I as a principal is here today to bestow your aspiring friends with responsibility of leading their school from front with their commitment.
confidence, and competence. They are the trailblazers, the innovators, the torchbearers, the leaders, the chosen few upholding the values the school stands for. I am sure they will be like a beacon, occupying the most coveted positions, providing direction to their friends and aiding smooth governance to the school. They will be called as Elite School Senate. I am very confident and I dream that my students will shoulder our responsibilities and they will dream big and aspire like us. It is rightly said, he who would learn to fly one day must first learn to stand, walk and run. Students of today are the visionaries and torch bearers of tomorrow. When we develop personality, skill and mind, we develop responsible human beings with leadership qualities. I would like to share a poem written by me for you. So please remember each and every word of this poem which I have written for you today in the morning. The poem says, "To my students, I give my heart, sharing love each day from the very start. To my students, I give my being, to love, to play, to work and to sing. To my students, I give my mind, learn each day to be more kind. To my students, I give my soul, growing together to be more as a whole. To my students, I give my experience and life, filling each day with joy and bliss, and rejoice every day like showers of blessing in your own way." Thank you, students. In the end, I would like to congratulate the Senate standing in front of us, the all leaders, head boy, head girl, captains, vice captains, and I would like to tell the children sitting here, they are also the leaders in one or the other way. So please follow your leaders from now on and make Starex a disciplined and a school which is flying high with flying colors. Thank you so much. और अंत में एक हिंदी की शेर व शायरी का एक हिस्सा है, वो जो प्यारे बच्चों के लिए है। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन, देखता है आसमां। धन्यवाद। Yes, good morning, Honorable Chief Guest, respected Colonel Sir, Principal Madam, my fellow teachers and my dear students. It's a great pleasure to enjoy this auspicious day with all the lectures. Starex is not only excel in academics but also in sports and cultural activities. Today's ceremony is awesome and I am very delighted as I am part of it. I thank to all my leaders of the students who participated in this ceremony and express heartiest congratulations to them. I hope in future Starex progress with leaps and bounds. Thank you, sir. Thank you, madams, my fellow teachers and my dear students. Thank you very much. 1, 2, 3, start.
stay over here for the photograph. Yes, before going, all of you will stand up, and as the ceremony, at the end we have something for us. Do you remember? Okay, then get up. This time more louder. Bharat Mata ki! Very good. Okay, all of you say it, and only Athena out and Gia. Manu, come. After this photograph. Yeah, please come. आप पीछे हो जाओ. Yeah, it's over. Okay. सर एक मेरा अभी पकड़ ले इसको. थैंक यू. थैंक यू सर. अजीत प्लीज जी आइए. आप आइए. आइए इधर साइड. हाँ जी. यस रेडी. एक सेकंड. Smile. हाँ जी. यस. यस रेडी. थैंक यू. Now we'll come again. One more. आइए. ऐसे खड़ा रहिए. हाँ जी बिल्कुल सर. हाँ जी. यस. Smile. Cheese. हाँ जी. यस रेडी. ठीक है. Smile cheese. यार, थके हुए हो पर ready. चीज बोलने में टाइम नहीं लगता. युवराज चीज. You're that much tired. Some of you look like totally, finished. Why? थैंक यू सर. Okay. Hey, Chotu. हाँ जी. यस. रेडी. मैम थोड़ा. हाँ हाँ. हाँ जी. यस. Last you. my हाँ जी. यस. थैंक यू सर. तानिया शर्मा जी, आज आपका हेड गर्ल बनाया गया, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, आई एम फीलिंग वेरी गुड. बहुत अच्छा लगा. आई एम फीलिंग वेरी गुड. फ्रॉम द क्लास 8 आई वांटेड टू बिकम लाइक हेड गर्ल. ना टुडे आई हैव बिकम. सो आई एम वेरी हैप्पी. जी, कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. मैं थैंक करना चाहूँगा टीचर्स को जिनने मुझे अपॉइंट किया है हेड बॉय, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सिंसियरली निभाऊँगा. थैंक यू. कैसा लग रहा है? I'm feeling very grateful and lucky that I have made the Vice Girls Captain, and I'll strive to follow all the duties and all the rules and regulations of the school. आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं और गर्ल? Girls, 7. तो आपके साथ में से चुने गए हैं, फर्स्ट ओनली यू? Yeah, I have given this duty and the others have given their duties. आप आइए प्लीज आइए. थैंक यू. आप अच्छा लग रहा है. तो क्या कहेंगे अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के? बस यही दैट आई विल डू माय ड्यूटी वेरी इजीली एंड आई विल डू माय बेस्ट. स्पोर्ट्स की जिम्मेवारी सौंपी गई है आपको, तो कैसा लग रहा है आपको? I feel very grateful, and my level best to make good team of stars in various sports. स्कूल को किस उस पर देखना चाहते हैं आप? तो स्कूल की टीम की बात करेंगे And national level. नेशनल लेवल पे, तो अचीव कर पाएंगे आप अपने कार्य? Yes, I think so. थैंक यू. कैसा लग रहा है आपको? I feel very grateful, and
as ma'am select me vice captain of Atlas House, then I do very well. थैंक यू। हाउस कैप्टन से आपको नवाजा गया, तो कैसा लग रहा है प्रियंका? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। तो क्या कहेंगे अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स को? मैं कहना चाहूँगी कि मैं इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगी एंड थैंक्स टू दिस टीचर्स जिन्होंने मुझे पोस्ट दी। आपने जी, नाम क्या आपका? मोनिका चौधरी। मोनिका, क्या कहेंगे स्कूल के लिए? This StarX International School have been given me a very nice opportunity to prove myself as a cultural captain and I'm feeling so great. अपने इंडियन कल्चर को किस वे पे देखते हैं? Our Indian culture is a very great culture. It's in lots of countries we are not getting this kind of culture and it's a very different. In India we are having a very different types of culture. इंडिया इज द बेस्ट। Yes, India is the best. थैंक यू। क्या कहेंगे आप आज इस अचीवमेंट पर? I'm feeling very proud to stand here and I thank my teachers and principal ma'am that they supported me and I will make sure that I'll follow all my duties whatever are given to me. थैंक यू। StarX स्कूल की बात करें तो दो शब्दों में क्या कहेंगे? So it's the best school over all the India as well as in the foreign also. तो आप क्या समझते हैं कि आपके पेरेंट्स ने स्कूल में डाला तो आपके साथ तो कैसा लग रहा है आपको? So I'm very lucky to be in the school. When my parents are very happy because I'm in school. कितने साल से स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे? So actually I'm new over here. So only 1 month. अच्छा लग रहा है आपको? Yes sir, I'm very happy. थैंक यू। शुभम, अगर जो स्कूल की दो शब्दों में आपसे बात करें तो क्या परिभाषा देंगे आप StarX की? मैं 2 शब्दों में स्कूल की परिभाषा दूंगा कि ये स्कूल हमारे लिए सर्वगुण संपन्न है। हर चीज़ हमें सब कुछ मिल रहा है स्कूल में। टीचर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, हमें फ्रेंडली ट्रीट करते हैं और हर लेवल के गेम्स तक हमें लेकर जाते हैं और उस तरीके से हमें पढ़ाते हैं, हमें सब अच्छा लगता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, हमारे पेरेंट्स ने अच्छे स्कूल में हमें एडमिशन दिलाया है। सो आई रियली थैंक्स फॉर दिस स्कूल विच इज़ गिविंग मी दिस स्टडी। थैंक यू। जयश्री, पुष्पा मैडम के आने के बाद यहाँ पे आर्मी के रूल रेगुलेशन ज़्यादा आ गए, तो क्या कहेंगे आप? So it is good because everyone in the school should be हमें अपने जितने भी स्कूल में आर्मी के रूल्स लेके आने चाहिए जिस वजह से हम लोग अपने देश की कदर करें और अपने देश का बहुत आगे नाम बढ़ाएं। तो आप क्या अचीव करना चाहेंगे इंडिया के लिए? कि इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द फ्यूचर एंड वो तो पूरा विश्व मानता, आपकी बात कर रहा हूँ। फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। थैंक यू। किस स्कूल के लिए? स्कूल बहुत ही अच्छा है। मैं स्कूल के बारे में कोई बुराई नहीं करना चाहूँगी। मैंने जितना देखा है इसने स्कूल ने मेरे को सब कुछ दिया है। तो कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? 11वीं। कौन सी, कितने ईयर से हैं यहाँ पे? 7 साल से। 7 साल से आप इसी एक ही स्कूल में हैं? यस सर। तो कभी स्कूल चेंज करने का मन नहीं हुआ? नो सर। रीजन? I love the school, I love the teachers, the behavior they give, I love everything in the school. आज जो आपने अचीव किया तो क्या कहेंगे इस पर? I am very happy and I am very thankful to all my teachers and I will follow and मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहूँगी। क्या कहेंगे आज के अचीवमेंट पर आप? This is a very nice and my teachers and they will organize very well the ceremony and this is a very good achievement of the school if they organize any function. This is very nice and the principal is also very nice. इंडियन कल्चर को किस नज़रिए से देखते हैं? According to me, Indian culture is very unique because in India different religions live together and they celebrate different festivals together. No matter that if it is a Hindu festival or Muslim festival, everyone celebrate it together. And most important thing, in India there is unity in diversity. सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम पहले तो आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आपने इंडियन कल्चर को इस तरह से प्रमोट करते हुए एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। आज क्या कहेंगे, क्या आयोजन था आज का? आपकी शुभकामनाओं के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम पद ग्रहण समारोह था। इस कार्यक्रम में प्रिंसिपल और अध्यापक कुछ अपने उत्तराधिकारी चुनते हैं जो उनकी कुछ जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे और बड़े ही लगन से उनको निभाएंगे
और उसमें बहुत ही सक्षम रूप से उसे पूरा करेंगे। आज इस संस्था की प्रिंसिपल होते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने अपने देश के कुछ कर्णधारों को उनके लक्ष्य की ओर जाने के लिए एक रास्ता दिखाया है। इन्हीं बच्चों में कुछ ऐसे नेता होंगे या कुछ ऐसे डॉक्टर, पायलट, प्रोफेसर्स होंगे जो इस देश की आने वाली जनरेशन्स को आगे बढ़ाएंगे। हम इनको लक्ष्य देकर, इनको रास्ता दिखाकर एक तरीके से अपने देश के नई जनरेशन को एक नया आयाम दे रहे हैं, जिस मुकाम को पूरा करने के लिए हम सिर्फ एक जरिया हैं। और अध्यापक पूजनीय होता है और इन बच्चों को ये सिखाना चाहती हूँ कि आज बच्चों, अगर आप अपने अध्यापकों की बात सुनोगे तो आगे अपने जीवन पथ पर कभी भी आप पीछे नहीं रहेंगे और आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल अवश्य रहेंगे। धन्यवाद। माय नेम इज एनपी सिंह। सिंह साहब, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम पर? बच्चों के लिए क्या, किस तरह से विशेष करें? आज के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट हमारे स्टार हैं, चूँकि दे आर द स्टूडेंट ऑफ स्टार स्कूल एंड दीज आर आवर सुपर स्टार। ये जो हमारे पीछे बच्चे करें, ये हमारे सुपर स्टार हैं, क्योंकि इनके ऊपर आज इतनी बड़ी यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सारे बच्चे अपने पूरी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और साथ में अपने एकेडमिक्स को, अपने उद्देश्य को अपने लाइफ में एक दिन अवश्य अचीव करें। थैंक यू। तो सर, इनसे अप्रोच लगाइए, मुझे ऑटोग्राफ देते हैं सारे। सर, आज तो ये इस लायक नहीं है, बट एक दिन ये ऐसा अवश्य होंगे कि आप इनके साथ इंटरव्यू आएंगे लेने और ये आपको ऑटोग्राफ। सर, हर इंसान के अंदर एक गॉड गिफ्ट होता है, हर इंसान के लिए गॉड गिफ्ट होता है। ये मेरे देश का गिफ्ट है। बिल्कुल सर, ये हमारे उपहार हैं, न कि स्कूल के, ये हमारे पूरे देश के। और ये सभी, मैं आपको ये बात आज ही आपको इनके साथ मैं जो है सो इंश्योर भी करता हूँ कि हमारे स्कूल का ही नहीं, हमारे पूरे देश का भी नाम ये एक दिन रोशन करें। थैंक यू। थैंक यू। As according to school's name, they are all the stars of the world. क्या बात है सर, क्या कहेंगे सर आज के अचीवमेंट के लिए, इन स्टूडेंटों के लिए? हमने कुछ उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो बड़ी ईमानदारी से अच्छी तरह से निभाएंगे और आई होप दैट कि दे आर ऑल आर स्टार्स ऑफ दिस। आज जो गर्ल्स ने अचीव किया है, तो उन लड़कियों के लिए क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगी कि आज यहाँ इस छोटे मंच पे वो आगे आई हैं। अपने पूरे देश का वो एक दिन नाम जरूर रोशन करेंगी। वो सारे देश के सामने कोई अच्छे से पायलट बन के, कोई डॉक्टर बन के अपने देश को सर्व करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से हिंदुस्तान कल्चर के अंदर, अपने इंडिया के अंदर लड़कियों का रेशा गिरता जा रहा है, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मेरा ये मानना है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं, बल्कि उनसे एक कदम आगे हैं, या ये कहें 2 कदम आगे हैं। ये हमें आज से, अभी से अपने देश की सोच बदलनी होगी और हमें लड़कियों का अनुपात लड़कों से ज़्यादा करना होगा, क्योंकि वो एक लड़की ही है जो आगे जाके अपनी जनरेशन को, अपनी पीढ़ी को बढ़ाती है। जैसे आज बच्चों ने अचीवमेंट अपना हासिल किया, तो क्या कहेंगे बच्चों के लिए? मैं सबसे पहले सभी बच्चों को बधाई देना चाहूँगी और मैं ये कहना चाहूँगी कि इसी तरह वो अपना मेहनत और अपनी हिम्मत से आगे बढ़ते रहें और आगे भी ऐसे ही मंचों पे आगे बढ़कर और अपने स्कूल का और देश का नाम रोशन करें। जी, जिस तरह से अब आज एक हमारे यहाँ पे कल्चर चला हुआ है कि बेटियों को कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में या कहीं ना कहीं उनको बेटों से पीछे माना जाता है, तो क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के हमारे जो युवा हैं, इनको इस चीज़ का अपने लिए जिम्मेवारी उठानी होगी। जो हमारे आज के लड़के हैं, उनको इसमें आगे अपना कदम बढ़ाना होगा। अभी इसी से शुरुआत की जाएगी अपनी सोच बदलने में। कुछ कदम हर घर से, हर स्कूल से, हर परिवार से अगर लिए जाएंगे तो ये छोटे छोटे कदम बन के ही आगे हमारे देश के लिए ज़रूर इस सोच को बदलने में हमारी सहायता करेंगे। ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। सर, मैं अपने देशवासियों और अपने हरियाणा वासियों से कुछ कहना चाहूँगा कि उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ और बढ़ चलो उस जहाँ की ओर जहाँ पे तुम्हारे नर जीवन सफल हो जाएगा। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा, उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ और बढ़ चलो उस चमन की ओर जिस देश में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ थी। बना दो इस देश को फिर से सोने की चिड़िया। जय हिंद, जय भारत।
जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो आप लोग इसको माइक हाँ जी यस पत्ता लेके जाओ